solid stage assembly building, SSAB, where the S200 motors are assembled to the nozzle. The S200 motor comprises of 3 segments connected by tongue and groove joint. This is the head end segment being hoisted to be placed on the middle segment. MCC confirms data from chain 2. This is the second motor. There are 2 motors of S200 in an LVM3 rocket. When both the S200 motors are assembled in their dedicated towers, they are placed on the mobile launch pedestal thereafter. The hoisting of individual S200 motors you are able to see. This is the strap-on nose cone, which houses the electronics and gives the aerodynamic shaping. T-minus 21 minutes. All stations change over to channel 2. The 2 S200 motors having assembled, the L110 core stage, which is 21.4 meters long, is assembled, and then it is moved to the SSAB. After that, the partially assembled launch vehicle is moved to the VAB. You are watching cryo stage now. अभी आप सभी दर्शकों ने देखा 2 S200 बूस्टर्स और उनके बीच में L110 चरण है, जो कि तरल नोदक वाला चरण है, लिक्विड स्टेज, और यह क्रायोजेनिक स्टेज है जिसे हम CS25 कहते हैं। क्रायोजेनिक ईंधन का उपयोग करता है यह चरण, और इसे भी L110 के ऊपर में समायोजित किया जा रहा है। इक्विपमेंट बे, और इसके ऊपर में हमारा एनकैप्सुलेटेड असेंबली है। यह उपग्रह को पूरी तरह संरक्षित रखा हुआ है। इस एनकैप्सुलेटेड असेंबली को VAB लाकर इसे यान में समायोजित किया जाएगा। यह व्हीकल असेंबली बिल्डिंग में क्रेन की मदद से इसे उठाकर L110 के ऊपर में क्रायो स्टेज चरण के ऊपर में समायोजित किया गया। The satellite CMS-03 will be brought as an encapsulated assembly, and now this is the fully assembled LVM3-M5 rocket. Vehicle systems are ready to proceed with पूर्ण समायोजित हो जाने पर तथा परीक्षण हो जाने पर इस यान को व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से उम्बिलिकल टावर तक मोबाइल लॉन्च पेडेस्टल पर लाया जा रहा है। यह दूरी लगभग 930 मीटर की, इसे बहुत ही धीमे, सुरक्षित तथा गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए सभी कार्य किए जा रहे हैं। Mission Director Roger. The second launch pad is based on integrate, transfer and launch. The rocket is now being brought to the umbilical tower of the second launch pad. Director confirms readiness of all distract elements for LVM3-M5. आगे की गतिविधियां उम्बिलिकल टावर से पूरी की जाती हैं, जैसे कि संचार जांच, ईंधन का भराव, तंत्रों की स्वास्थ्य जांच आदि। यह यूटी से सुदूर स्थल तक संपन्न की जाती हैं। And launch authorization board and the readiness of vehicle, spacecraft, range and ground stations network. Mission Director hereby authorizes for the commencement of automatic launch sequence for the launch of LVM3-M5 CMS-03 mission today at 17 hours 26 minutes. All stations to note, Mission Director authorized the launch of LVM3-M5 CMS-03 mission. अभी आपने देखा यान निदेशक, अंतरिक्ष यान निदेशक, कमांड टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड निदेशक और रेंज निदेशक ने अपने तंत्रों की सूचना मिशन निदेशक को दी। तत्पश्चात मिशन निदेशक ने इस प्रमोशन के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया। We are getting ready for the LVM3-M5 CMS-03 launch. We are about 17.5 minutes away from the launch. I am Madhuri giving the commentary in English. With me is my co-commentator, Shri Vikas Swarnkar, who will be giving the commentary in Hindi. Let us witness the momentous occasion of the heaviest satellite of ISRO being launched by its homegrown launch vehicle on its 5th operational mission.
The launch is scheduled today, the 2nd of November 2025 at 17:26 hours Indian Standard Time from the second launch pad of Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota, located in the southern state of Andhra Pradesh in India. Timing to control, timing. We are bringing the live commentary from Roger. MCC at PLCC SDSC and Shar. LCC to note, timing confirmed, external hold. The objective of the mission is to place CMS-03, a communication satellite weighing 4,410 kilograms, into 170 kilometers by 29,970 kilometers elliptical geosynchronous transfer orbit with an inclination of 21.4 degrees. Since it's a GTO mission, the launch will take place on eastward trajectory. Data are on at SHAR1 and SHAR2 stations. This copy. In a concert of all time-bound activities that culminate towards the launch, the various systems of the launch vehicle, satellite tracking and the range get ready in all respects. Based on the confirmation of readiness of all crucial elements, the mission director authorizes the commencement of automatic launch sequence, 16 minutes. which is initiated at 14 minutes 30 seconds ahead of the Mission launch. director to ALS console. Based on the clearance from the mission director, vehicle director authorizes for the automatic launch sequence for the LVM3-M5 CMS-03 mission. LSA Roger. SDS servers activated. MC confirms reception of SHAR1 and SHAR2 data. Automatic launch sequence initiated for LVM3-M5 CMS-03 mission. ALS in auto mode. जैसा कि भी आपने सुना, यान निदेशक ने ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने का अनुमोदन दिया और उसके पश्चात ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू हो चुका है. Automatic launch sequence comprises of a capsule of very essential checks for the rocket. Subject to satisfactory confirmation, the onboard computer is set to flight mode 15 very minutes. close to the launch. TGS confirms 5 GN to supply to Cryom. इस प्रमोशन की उल्टी गिनती 24 घंटे पूर्व प्रारंभ हो चुकी है. अब हम उड़ान से 14 मिनट 50 सेकंड की दूरी पर हैं. काउंटडाउन सीक्वेंस जारी है और इस दौरान यान को पावर ऑन कर सभी तंत्रों का स्वास्थ्य जांच पूरी की जा चुकी है. तरल नोदक का भराव की स्थिति प्राप्त कर तरल नोदक का भराव सुनिश्चित किया गया. S200 मोटर नोजल फ्लेक्सिंग के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम को तैयार किया गया. क्रायोजेनिक सिस्टम को तैयार कर क्रायो ईंधन का भराव सुनिश्चित कर लिया गया है. हवा की गति, मौसम का पूर्वानुमान, ऐसी सभी चीजें जो प्रमोशन के लिए आवश्यक हैं, उन सबको सुनिश्चित कर लिया गया है. सभी इलेक्ट्रॉनिक तंत्रों की जांच पूर्ण हो चुकी है और यह सभी कार्य संतोषजनक तरीके से पूर्ण किए जा रहे हैं. इसी वजह से काउंटडाउन अबाध रूप से जारी है. अब ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू हो चुका है. इस दौरान कुछ आवश्यक जांच की जाएंगी. सभी फायरिंग लाइंस को आर्म मोड में डाला गया. कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे प्रथम चरण का प्रज्वलन. The countdown for LVM3-M5 CMS-03 mission has been 24 hours long. It had commenced on 1st of November, that is yesterday, at 17:26 hours IST. The vehicle and satellite system have been checked out. The stage tanks have been serviced with the propellants. The earth-storable liquid propellants have been serviced soon after the commencement of countdown, while the cryogenic propellants have been serviced only a few hours ago. The command system gas bottles have been charged to requisite pressure and the range radars are gearing up for action. The final phase of weather updates and day of launch wind biasing program is uploaded to the launch vehicle. We are 13 minutes away from the launch. C25 EGC radar chain activation in progress. LVM3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मिशन 5. इस प्रमोशन मिशन का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है. सर्वप्रथम T=0 पर S200 स्टेप ऑन बूस्टर प्रज्वलित होगा और यान को द्वितीय प्रमोशन मंच से उत्थापित करेगा. इसके 107 सेकंड के पश्चात L110 चरण भी प्रज्वलित किया जाएगा. इस दौरान यान 41.4 किलोमीटर की सापेक्ष गति 1.34 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति पर होगा
और लगभग 24 सेकंड तक दोनों S-200 बूस्टर तथा L-110 चरण साथ में प्रज्वलित रहकर यान को 65 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 1.61 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति पर ले आएंगे। इसके पश्चात S-200 बूस्टर कुल 131 सेकंड का कार्यकाल समाप्त कर यान से पृथक कर दिया जाएगा, लेकिन यान के द्वितीय चरण L-110 कार्यरत रहेंगे और अपने 200 सेकंड के कार्यकाल के पूरा करने के पश्चात इसे भी यान से पृथक कर दिया जाएगा। इस दौरान यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत होगा और जैसे ही यान घने वातावरण से निकलेगा, इसमें लगे ऊष्मा कवच जो कि अंतरिक्ष यान को घने वातावरण में कर्षण से बचाते हैं, उन्हें यान से पृथक कर दिया जाएगा। L-110 चरण के पृथक होते ही लगभग 4 सेकंड के पश्चात यान के तृतीय चरण और अंतिम चरण क्रायोजेनिक स्टेज का प्रज्वलन शुरू होगा। यह लगभग 644 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर यान को कुल 175 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 9.76 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति प्रदान करेगा। यही वह स्थिति होगी जब अंतरिक्ष यान को CMS-03 अंतरिक्ष यान को पृथक कर उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित किया जाएगा। अब आप सभी दर्शकों के सामने प्रस्तुत है इस मिशन का कर्टेन रेजर वीडियो। The Indian Space Research Organization, ISRO's remarkable journey in advancing space technologies stands as a testament to visionary leadership, relentless innovation, and unwavering determination. Over the past decade, under the guidance and vision of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, ISRO has achieved unprecedented milestones, setting new global benchmarks in space science and technology. Through its groundbreaking missions and technological excellence, ISRO has positioned India prominently on the world map of space exploration and continues to inspire generations with its pursuit of scientific advancement and national pride. Currently, ISRO is all set to ignite the skies with the launch of the CMS-03 satellite. This satellite is a multi-band communication satellite designed to meet user requirements with significant enhancements to its payload systems. Configured on ISRO's proven I-4K bus, CMS-03 has an approximate mass of 4,400 kilograms and is expected to operate for a mission lifespan of 15 years. CMS-03 stands as the heaviest satellite ever to be launched from Indian soil into the Geosynchronous Transfer Orbit (GTO), marking a significant milestone in India's space journey. The satellite will be positioned in geostationary orbit, providing extensive coverage and continuity in communication services. The CMS-03 satellite will be launched by ISRO's LVM3, a 3-stage launch vehicle equipped with 2 solid strap-on boosters S-200, a liquid core stage L-110, and an indigenously developed cryogenic upper stage C-25. The C-25 stage is powered by a high-thrust and high-performance engine that uses a combination of liquid oxygen and liquid hydrogen as propellants. With an overall length of 43.5 meters, a gross lift-off weight of 640 tons, and a 5-meter diameter payload fairing, the LVM3 represents ISRO's indigenous capabilities, providing launch services to various users. With CMS-03, ISRO not only strengthens India's space capabilities, but also reaffirms the nation's position as one of the leading spacefaring nations in the world, and advancing steadfastly towards the vision of Viksit Bharat 2047. That was the curtain raiser for the CMS-03 satellite.
and about the mission of ISRO. We are 7 minutes 15 seconds from the launch. Let me in the meantime take the viewers through the planned mission events for LVM3-M5 CMS-03 mission. The launch is scheduled at 17:26 hours with the ignition of the two S-200 boosters simultaneously, marking the T0 for the launch. The L-110 core ignites mid-air at an altitude of 41.4 kilometers, 107 seconds into the flight. The two S-200 motors and L-110 together burn till 131 seconds. At this instant, the launch vehicle is at an altitude of 62.3 kilometers. Closed loop guidance is initiated 10 seconds after S-200 separation. At an altitude of 110 kilometers, since the dense atmosphere is no longer present, the payload fairing is separated and jettisoned. The burn time for L-110 stage for the present mission is 197.8 seconds. At 5 minutes into the flight, the staging event takes place to separate the L-110 from the ongoing launch vehicle. The cryogenic stage C-25, which is the third stage of LVM-3, then ignites and continues to operate for 643.8 seconds. External power withdrawn. The relative velocity of 4.1 kilometers per second at the C-25 ignition increases to 9.7 kilometers per second during the cryo stage operation, while the launch vehicle climbs from 168 kilometers to 175 kilometers, that is 7 kilometers in altitude. The mission has been adapted to carry the heaviest satellite so far, CMS-03, weighing 4,410 kilograms into sub-GTO. The launch vehicle reorients to obtain the correct altitude after the cryogenic stage shutdown, and the satellite is injected into the orbit. यहाँ काफी अधिक संख्या में दर्शक दीर्घा भी उपस्थित इस प्रमोशन का आनंद लेने। सभी छात्र छात्रा यहाँ उपस्थित हैं। इनका उमंग देखते ही बनता है। सभी बहुत उत्साहित इस प्रमोशन के लिए। जब LVM-3 के दोनों S-200 स्टेपॉन बूस्टर्स प्रज्वलित होंगे, कंपन करता हुआ यह आकाश की ओर जाएगा। बहुत ही रोमांचक दृश्य होता है ये। सभी का उत्साह बहुत ही चरम पर। अब हम उड़ान से 4 मिनट 20 सेकंड्स की दूरी पर। वर्तमान मिशन में यह LVM-3 की 5वीं परिचालन उड़ान है। इसमें CMS-03 नामक संचार उपग्रह का प्रमोशन किया जा रहा है। CMS-03 एक बहु स्पेक्ट्रमी संचार उपग्रह है जो भारतीय भूभाग सहित एक विस्तृत समुद्री क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। लगभग 4,410 किलोग्राम वाला CMS-03 उपग्रह भारतीय धरा से भू समकालिक अंतरण कक्षा में स्थापित किया जाएगा। जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचने के पश्चात अपोजी मोटर को फायर करके इसे उचित कक्षांतरण किया जाएगा और कुछ समय पश्चात यह जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट पर पहुंच जाएगा, जहां से वह निरंतर संचार सेवाएं प्रदान कर सकता है। We are 3 minutes 10 seconds from the launch. The LVM-3 launch vehicle of ISRO stands 43.5 meters tall and weighs 642 tons at liftoff. It is designed with improved reliability, operability, and redundancy management. The twin S-200 motors of 25 meters length and 205 tons of HTPB-based solid propellants forms the first stage. Each motor develops a peak vacuum thrust of 5,952 kilonewtons. The action time is 126.6 seconds. The second stage is L-110, which signifies
The 116 tons of Earth storable liquid propellant combination of UH-25 and N2O4. Two numbers of high thrust Vikas engines power the stage of LVM3-M5 mission with an operated thrust of 1600 kilonewtons cumulatively. It is 21.4 meters long. The third stage is called C25. It has 28.6 tons of cryogenic propellant loading of liquid hydrogen and liquid oxygen. Operating on a gas generator cycle, the engine develops 19.3 tons thrust. Unique to the Mark III launch, it is a very huge rocket. When it ignites, a condition of overpressure is generated. Thrusting of solid rocket motors creates enormous acoustic levels, which have a potential to affect the electronic components in the launch vehicle and satellite. To mitigate the acoustic levels, the acoustic suppression system floods the launch pad with large amount of water through the nozzles, so that a denser medium of water prevails around the rocket for the acoustics to travel through. This is how the acoustic levels are mitigated. I urge the viewers to watch for All it. stations And there is a stand ground by for the critical time mark. system called cryo-arm, which 1 will minute. swing out at T-8 seconds. minus 55 seconds, जहाँ LVM3 पूरी तरह तैयार है minus 50 प्रमोशन seconds, के लिए. Gas bottle ready. Cryo stage ready for launch. minus 45 seconds, minus 40 seconds, minus 35 seconds, minus 30 seconds, Real-time programs activated. minus 25 seconds, minus 20 seconds, minus 15 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. S200 motors ignited. Plus 5 seconds. S200 बूस्टर्स का सफलतापूर्ण प्रज्वलन और LVM3-M5 का उत्थापन द्वितीय प्रमोशन मंच से. We have a magnificent liftoff, the LVM3-M5 CMS-03 mission in the air. The simultaneous thrusting of the twin S200 motors is indeed a sight to behold. Plus 30 seconds. GSLV Mark III LVM3 के नाम से जाना जाता है. यह हर बार एक कहानी लिखता है. पिछली बार हमने इसे चंद्रयान 3 पर देखा था और अब हम देख रहे हैं LVM3-M5 CMS-03 mission. A clear Sriharikota sky and the LVM3 silhouette. Sharwan is in main Thrill auto. and satisfaction together at the countenance of the witnessing ISRO scientists. Shark 2 Plus is in 1 main auto. minute. दोनों स्टेप-ऑन बूस्टर्स S200 बूस्टर्स सामान्य निष्पादन करते हुए अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं. यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जाते हुए. The Shah's tracking station continued to track the trajectory. First stage performance normal. प्रथम चरण का कुल कार्यकाल 126 सेकंड का होगा. तत्पश्चात S200 बूस्टर शांत हो जाएंगे और उन्हें यान से पृथक कर दिया जाएगा. इस कड़ी में अगला चरण L110 चरण का प्रज्वलन है. L110 engine started. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है. द्वितीय चरण L110 चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है. We have a confirmation from the Range Operations Director that the second stage L110 has commenced its operation. L110 engine performance normal. The two Vikas engines together generating 1600 kilonewtons thrust in its high thrust version. S200 motors separated. रेंज ऑपरेशन निदेशक ने भी इसकी पुष्टि की. दोनों S200 बूस्टर्स को यान से पृथक कर दिया गया है. वर्तमान में L110 स्टेज, जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, प्रज्वलित है और यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है.
We have had the separation of the S200 motors and L110 is currently thrusting. तरल नोदक पर आधारित यह चरण उच्च प्रणोद वाले विकास इंजन की मदद से कुल 1600 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। इंजन की अधिकतम प्रभावी क्षमता प्राप्त करने के लिए इसमें ईंधन और ऑक्सीडाइजर का खास अनुपात में मिलाकर प्रज्वलित किया जाता है। इस चरण का प्रज्वलन काल कुछ 200 सेकंड का होगा। First stage performance normal. The tracking station at Sriharikota continues to track and the Port Blair station will start to acquire signals at about Payload fairing T separated. plus 200 seconds onwards. Now we have a separation of payload fairing. जी हाँ, अब यान 115 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है और इस वजह से यह घने वातावरण से बाहर जा चुका है। अब ऊष्मा कवच की आवश्यकता नहीं रह जाती, इसलिए इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। The payload fairing has been jettisoned as the rocket has cleared the dense atmosphere. There's no need anymore to give aerodynamic shape to the rocket or to safeguard the satellite against aerodynamic heating. Plus 4 minutes. First stage performance normal. L110 स्टेज वर्तमान में प्रज्वलनरत है। सामान्य निष्पादन करता हुआ द्वितीय चरण LVM3 रॉकेट का कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे। यह L110 स्टेज अपना कार्यकाल समाप्त कर शांत हो जाएगा और कुछ ही उसके पश्चात क्रायो स्टेज का प्रज्वलन शुरू होगा। Cryo stage ignition authorized. While the L110 stage is still operating, the cryo stage ignition has been authorized. For the present mission, L110 stage is scheduled to burn for engine shut off. 197.8 seconds. First stage separated. And Cryo here we stage have a ignition confirmation commanded. of the staging event. Cryo stage ignition confirmed. Now the third stage of LVM3, the cryogenic stage, has commenced its operation. जी हाँ, यहाँ दर्शकों में उल्लास देखा जा सकता है। दर्शक ही नहीं, यहाँ के वैज्ञानिक जो कि सबसे जटिल कहे जाने वाले क्रायोजेनिक इंजन का प्रज्वलन देखकर बहुत ही उत्साहित हैं। यह सफलतापूर्वक प्रज्वलित कर दिया गया है। A jubilant scene here in the Mission Control Center at Sriharikota and also among the visitors gallery. The cryo stage has commenced its operation and it's continuing to operate with 28.6 tons of cumulative propellant loading of liquid hydrogen and liquid oxygen. The engine develops 200 kilonewton thrust. यान अपेक्षित पथ का पूर्णतः अनुकरण करता हुआ उद्दिष्ट कक्षा की ओर जा रहा है। LVM3 रॉकेट के ऊपरी चरण को हम क्रायोजेनिक अपर स्टेज कहते हैं, क्योंकि इसमें क्रायोजेनिक ईंधन, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। इस इंजन में गैस टरबाइन की मदद से लगभग 200 किलोन्यूटन का सामान्य प्रणोद उत्पन्न होता है। इस चरण का कार्यकाल लगभग 644 सेकंड का होगा। इस चरण तथा ऊंचाई 13.5 मीटर की होती है। इस चरण में दिशा निर्धारण के लिए इंजन जिम्बल कंट्रोल और रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है। कुल 28.6 टन क्रायो ईंधन का इस्तेमाल इस अंतरिक्ष यान में किया जा रहा है। Plus 7 minutes. क्रायो चरण सबसे जटिल इंजन होता है, क्योंकि क्रायो ईंधन जैसे लिक्विड हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट -253 डिग्री सेंटीग्रेड और लिक्विड ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तापमान में ईंधन को तरल बनाए रखना तथा इसका कार्यान्वयन करना सबसे जटिल होता है, लेकिन भारत अब इसमें पूरी तरह स्वायत्ता प्राप्त कर चुका है और इस चरण को इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी द्वारा तैयार तथा परीक्षित किया गया है।
यह प्रमोचन पूर्वी दक्षिणी दिशा का है। वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित ग्राउंड स्टेशन हम तक इस यान के आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं। +8 minutes. The satellite for this mission is CMS-03, which is a communication satellite operating on multiple bands. It is meant to provide services over a wide oceanic region, including the Indian landmass. To enable constant visibility of a satellite towards a particular region on Earth, the period of revolution of satellite in orbit should be same as the period of rotation of Earth on its own axis. This practically can be achieved if the satellite is placed at a slot at 36,000 kilometers above the equator. Launching a satellite into a geostationary orbit involves a meticulously planned series of steps. The LVM3-M5 rocket is expected to place CMS-03 satellite at an altitude of 180 kilometers with an inertial velocity of 10.15 kilometers per second. This orbit will have a perigee at 170 kilometers, which is the shortest distance of the satellite from Earth, and an apogee of 29,970 kilometers. That is the farthest it will be in the initial orbit, which is a temporarily stable orbit. The thrusters of the satellite are fired using the propellant carried on board at a precise point so that the apogee is at 36,600 kilometers. The next phase is the circularization of the orbit through a series of fine-tuned burns at apogee. That is how the satellite's velocity and trajectory are adjusted, +10 minutes. and the satellite is placed at a precise slot in geostationary orbit. The designated orbital slot determines the launch window. Maintaining a satellite in geostationary orbit, ensuring its effectiveness and longevity, is quite a task in itself. Gravitational perturbations due to the celestial bodies and the space weather are common causes for the disturbance of Cryostage satellite performance normal. position from its slot. A process known as station keeping involves firing the thrusters to counteract these forces. Presently, the cryogenic stage is operational and the performance is normal. LVM3 भारतीय प्रमोचक यानों की श्रेणी में 5वीं पीढ़ी का प्रमोचक यान है, जिसकी क्षमता 8,000 किलोग्राम उपग्रह को निम्न भू कक्षा में ले जाने की है। LVM3 के पिछले मिशन LVM3-M4 में भारत के गौरवशाली चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को हमने देखा था, जिसके माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बन चुका है। 2023 में ही LVM3-M3 और M2 ने OneWeb के कुल 36 उपग्रहों को प्रमोचित कर एक कीर्तिमान हासिल किया था। यह LVM3 की 5वीं प्रचालनरत उड़ान है। जून 2017 से शुरू करते हुए 2 विकासशील उड़ानें हुई और उसके पश्चात LVM3 रॉकेट को पूर्णतः प्रचालित कर इसमें 4 प्रसिद्ध प्रमोचन हो चुके हैं, जिसमें चंद्रयान 2, OneWeb के 2 मिशन और चंद्रयान 3 शामिल हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देख रहे हैं CMS-03 का प्रमोचन, और दर्शकों को याद दिला दें, यही वह प्रमोचक यान होगा जिसमें कुछ आवश्यक बदलाव के साथ गगनयान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। वर्तमान में क्रायोजेनिक स्टेज प्रज्वलित है, सामान्य निष्पादन करते हुए उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। We are 12.5 minutes past the launch and the altitude attained is
179.2 kilometers. The cryo stage operational. आप देख सकते हैं पूर्णतः अपेक्षित पथ का अनुकरण करते हुए LVM-3 लॉन्च व्हीकल। वर्तमान में सापेक्ष गति 7.27 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई 174 किलोमीटर। लगभग 4,410 किलोग्राम वाला CMS-03 उपग्रह भारतीय धरा से भू समकालिक अंतरिक्ष कक्षा में प्रमोचित किया गया है। अब तक का यह सबसे भारी उपग्रह है। यह अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। Cryo stage performance normal. Plus 14 minutes. For the present mission, the cryogenic stage is expected to operate for more than 640 seconds. CMS-03 संचार उपग्रह बहु स्पेक्ट्रमी संचार उपग्रह है जो भारतीय भूभाग सहित एक विस्तृत समुद्री क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करने जा रहा है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 450 सेकंड का होता है। यही कारण है कि यह ईंधन अन्य ईंधनों की तुलना में अधिक प्रभावी व कुशल माना जाता है। यही संख्या पृथ्वी भंडारित ईंधन के लिए 315 सेकंड और ठोस नोदक के लिए 275 सेकंड की होती है। इस चरण में उच्च प्रणोद वाले क्रायोजेनिक इंजन CE-20 में 28.5 टन नोदक की मदद से कुल 200 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न हो रहा है। कुछ ही क्षणों में अंतःक्षेपण की स्थितियां प्राप्त कर ली जाएंगी। तत्पश्चात क्रायोजेनिक स्टेज बंद हो जाएगा और हमारा अंतरिक्ष यान CMS-03 को उद्देश्य कक्षा में स्थापित किया जाएगा। The trajectory of the rocket is closely following the prediction. In a few seconds from now, the cryogenic stage would have completed its operation. Up next, we will be watching the satellite injection into its intended orbit. वर्तमान में ब्रूने स्थित भू स्टेशन हम तक यान के आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं। यान की ऊंचाई 176 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 9.63 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्रायोजेनिक स्टेज के सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए CMS-03 satellite separated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। CMS-03 अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक उद्देश्य कक्षा में स्थापित कर दिया गया है और इसके साथ ही यह मिशन सफल होता है। We have had a successful mission of LVM3-M5 CMS-03. 8th successful mission for the LVM-3 rocket, 5th in its operational series. CMS-03 delivered into its intended orbit.
LVM3-M5 CMS-03 mission accomplished. Handing over to mission director. Mission Director here. LVM3-M5 launch vehicle has injected CMS-03 spacecraft to the intended orbit. Mission has been successfully accomplished. जी हाँ, अभी आपने सुना ये हर्षोल्लास का पल जब LVM3-M5 CMS-03 पूर्णतः सफल रहा है। CMS-03 उपग्रह को उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। Jubilant situation here in the Mission Control Center upon the success of the mission. Up next is the address by Chairman ISRO, Dr. V. Narayanan. Good evening to all of you. I am happy to announce that LVM3-M5 launch vehicle has successfully injected the CMS-03 communication satellite in the required orbit. The satellite weighing 4,410 kg is precisely injected within the specification of the orbit. Let me congratulate the entire ISRO community, the project teams, all the team members and our industrial partners for your outstanding contribution for accomplishment of this great mission. This is our 103rd launch from Sriharikota and the 8th successful mission of the LVM3 launch vehicle. As all of you are aware, the previous LVM3 vehicle, that is the LVM3-M4, launched the most prestigious Chandrayaan-3 mission. That mission brought glory to the India as the first country to land the spacecraft successfully near the south pole of the moon.
Today's mission has brought yet another important glory to India. The CMS-03 is the heaviest satellite launched by the LVM-3 to the GTO orbit so far. For accomplishing this, the vehicle has to be improved, the performance has to be improved in multiple directions for enhancing the payload capability by 10%. In today's mission, all the vehicles systems have performed satisfactorily and the orbit we have achieved within the required specification. I am also happy to announce that till today, we have done 8 LVM3 launches, including the first experimental mission. And all the launches so far accomplished by the LVM3 vehicle is 100% successful. This great success is due to the open work culture of ISRO, meticulous and systematic mechanisms put in place for the review of various activities and the dedicated, hard and smart work of Team ISRO along with our industrial partners. Let me take this opportunity to congratulate each and every one of you, our family members, our industrial partners and the academia who have wholeheartedly support for this mission. Coming to the satellite, the CMS-03 satellite is a multi-band communication satellite with coverage over a wide oceanic region, including the Indian landmass, and is designed for providing communication services for at least 15 years. The satellite incorporates a host of new technologies and yet another shining example of Atmanirbhar Bharat. Let me congratulate the entire satellite team spread across various ISRO centers for realizing this very, very important, improved, complex satellite for the communication capability of our country. I must tell that we had really a tough, challenging time during the launch campaign. You know, the weather was not that cooperative. But then, let me take this opportunity to compliment each and every one of you. Even under this difficult weather condition, we could come out successfully and accomplish this mission in a grand manner and successful manner. Dear friends, let me also congratulate all the review team members, chairmen and members of various committees, including our mentors and earlier leaders who have shoulder to shoulder with us for accomplishment of this mission. We really congratulate and compliment each and every one of you and our family members on this occasion. And I also would like to announce an important experiment what we have carried out. The indigenously developed C-25 cryogenic stage. For the first time, we have, after successfully injecting the satellite in the orbit and reorienting the stage, for the first time, we have successfully ignited the thrust chamber. For the first time, reignited the thrust chamber. And this is going to be a great experiment which is going to feed data for restarting the cryogenic stage in future, for enabling the mission flexibility for placing multiple satellites in various orbits using the Bahubali rocket LVM3. Once again, my heartiest congratulations to each and every one of you. Now, along with me, we have got the project directors of the both launch vehicle and satellite, and all the center directors who have worked hard for accomplishment of this mission. Let us hear first from the LVM3 project director, Mr. Victor Joseph. Mr. Victor Joseph. Good evening, ISRO. Good evening, India. LVM3 has done it once again. Most respected Chairman ISRO, former Chairman Kiran Kumar sir, center directors, senior members and dignitaries here, and all those present here and online. Congratulations to each one of us for the 8th successful mission of LVM3. And this time, the vehicle has lifted the heaviest communication satellite from the Indian soil, the CMS-03, and injected it into the required orbit. And also for the first time, we have demonstrated the reignition of the cryogenic engine. On this proud occasion,
My sincere thanks to our beloved chairman for his continuous guidance and encouragement, and to all the center directors for their constant support. Special appreciation to all the review forums that meticulously examined every system, ensuring this flawless mission. My heartfelt thanks to the system development agencies across all launch vehicle centers, industry partners, assembly and integration teams, technical facilities, and quality assurance groups. This success truly reflects ISRO's spirit of teamwork. A warm thanks also to the family members of all team members for their unwavering support behind the scenes. Finally, I wish to acknowledge my project team, Vehicle Director Sri Biju Thomas, Associate Vehicle Director Sudish Kumar, Associate Project Director Sri Rajashagar, Deputy Project Directors, and every member of our team. Your technical excellence and commitment made this achievement possible. And before concluding, I wish Spacecraft Director and team for very successful spacecraft operations in the coming days. And with the same determination and teamwork, we will continue to make our nation proud. Thank you and Jai Hind. Now we will hear from the CMS-03 Project Director Sri Rajendra Kumar. Respected Chairman ISRO, Center Directors, colleagues, dignitaries present here, and all viewers watching this telecast. Good evening to all. It's a glorious launch of LVM3-M5 that has injected the CMS-03, the heaviest communication spacecraft from Indian soil, to the geostationary transfer orbit. In this joyous occasion, I express my sincere gratitude to the entire launch vehicle team for providing the spacecraft a precise orbit and giving a good beginning for the spacecraft mission. With the latest updates received from our mission team, the injection rates during spacecraft separation have been benign and the health of the spacecraft is normal. Starting from tomorrow, a series of orbit raising operations will be carried out to place the spacecraft in the intended geostationary orbit. On the technology front, as our chairman has already told, a number of indigenously developed technologies have been incorporated into this multi-band communication spacecraft, yet another stride by ISRO towards Atmanirbhar Bharat. I thank entire spacecraft team for working relentlessly in realizing this advanced communication spacecraft. I also thank all the teams across ISRO centers who have been a part of and contributed to this project. Looking forward to a successful spacecraft mission, I conclude. Thank you. Jai Hind. Now we will hear from the leaders of ISRO. First we will start with Mr. Nilesh Desai, Director of Space Application Center, who has realized the various payloads for the satellite. Yes, Nilesh. Thank you, Chairman sir, and all the dignitaries present here and all the participants in this very great event. Let me first congratulate Team ISRO as well as launch vehicle team, satellite team, and my own payload team for this stupendous achievement. And 7 has always been a lucky number. So we had GSAT 7 earlier and now GSAT 7 repeat. So let me compliment the user also, and we assure them that we'll provide a very good services for next 15 years. As has been already pointed out, this GSAT 7R or this CMS-03 will be having a multi-band payload in UHF, S, C and KU band. And that is the requirement of the users have been all fulfilled with a very wide coverage. And we'll have a lot of MD activities using this particular satellite. So let me compliment my payload team, especially for doing lot of indigenous elements like GAN SSPA. Then we have a OMUX which has been indigenously built, and like that many other new technologies. And first time we have tested a digital processor. So that will also go a long way into feeding into the future requirements related to SDR based configurable payloads for our users. So let me once again compliment Team ISRO as well as my own payload team at Space Application Center Ahmedabad, and wish all the best for this mission. Thank you. Next we will hear from Mr. Rajarajan, who is the Director of Vikram Sarabhai Space Center. Respected Chairman ISRO, the mentors, invitees, all my dear colleagues, and the entire project team,
once again all the best for the spacecraft as well as for a job well done for putting the spacecraft within the required orbit. Coming to after 2 years, as our chairman pointed out, we are coming back with our LVM3 launch vehicle, and once again we have made a successful launch with all those, in spite of the inclement weather conditions and all through the difficult launch campaign, we have taken a call to have this launch in this time, and we proved that the vehicle's robustness is kept, and the entire launch campaign across all the team has worked in a well-coordinated manner and with an open discussion in all aspects, and that's why it proved that this vehicle is capable of launching such a heavy spacecraft. As we demonstrated, this is a series of vehicles in which it has proven its success rate, and I'm glad that the entire team, the staff from all walks of life in our organization has put in their effort and might and worked to the perfection of what is required from each one of them. At this juncture, I also thank the entire family members of all the colleagues who have been really giving the moral support so that we are able to deliver in time for all these vehicles. Wishing you a great success in the coming days for the spacecraft and the team. Thank you. We have with us the director of U.R. Rao's Satellite Center, Dr. Shankaran. Under his leadership, the satellite was realized. Thank you, sir. Good evening. Let me start by giving a status update on the spacecraft. Those who have been following the previous missions and this mission, the propulsion valves have opened and the control system is able to take care of the spacecraft by firing thrusters. And this mission also has a very new antenna, which is a collapsible helix antenna, which has been developed for the first time. This antenna also, the base has been released as soon as the injection is over. That is the first activity after the propulsion valves are open. The CHA antenna base also has been successfully released. Unlike the smaller satellites, the solar panel in this mission will be opened after 5 days after going to the geosynchronous orbit. So we'll have to, but with the one panel which is looking at sun, the generation of power is happening and the spacecraft is well on its way towards reaching its final orbit. Let me take this opportunity to thank the launch vehicle community, particularly the LVM3 team, for delivering this satellite in its intended initial orbit. However, the job for us continues. Not only that we have to make the satellite, now we have to tend this satellite till it reaches its intended orbit, allow it to develop its functionalities and make it work for its entire lifetime up to about 15 years. So this work starts, and with the help of our friends at the master control facility, Hassan, our teams, the spacecraft teams are going to do this job. Best wishes to the entire project team and all the mission team, and congratulations to everyone who is present here, particularly to the user team who have been an excellent support throughout this realization of this spacecraft. The user team has been very, very supportive of us, for us in realizing, fully understanding our difficulties. Thank you, the team, for your support, and wishing everyone all the very best. Way to go. Jai Hind. Now we will hear from the lab chairman and the Satish Dhawan Space Center director, who has faced a very, very tough weather condition, Mr. Batma Kumar. Great job. Congratulations to each one of you. Actually, the weather has given us a great challenge. Cyclone Monda. And we did a great forecast to enable us to confidently go to UT. And the vehicle has braved the entire 1.5 days of heavy rain and very high winds. We were able to actually brave this weather and get the vehicle in its pristine condition, getting ready for the launch on today. My SHA team, each one of you are a hero.
The kind of work that you have delivered is really great. And all other teams who have supported them during this difficult period, and we have come out of it, and we have shown that we can even operate through a cyclone. Thank you. Thank you all. Let us do this job again and again. This mission has got 3 liquid propulsive stages, including the cryogenic stage and satellite propulsion. This is successfully realized by LPSC and ISRO Propulsion Complex Mahendragiri with the support of other centers. We have got the directors of LPSC, Mr. Mohan, and the IPRC director, Mr. Asit Pakiraj. We will hear from them. First, Mr. Mohan. Congratulations, India. Congratulations, ISRO, because this is basically a very important spacecraft for the national program, and it's great that ISRO has been able to do this job probably very close to the timeline what is demanded. As already mentioned, this was the heaviest spacecraft that has been launched from the LVM3 for a GTO mission, and the heaviest spacecraft also had a novel indigenous component of the propellant tank, around 1200 liters of biggest propellant tank was realized by the LPSC team, and which is integrated into the spacecraft, which is going to take its journey towards the final intended orbit. And also we have the to increase the payload capability from the cryogenic stage. The thrust was also increased by around 0.3 tons, which also gave additional payload improvement to meet this requirement of higher mass as well as the orbital requirements. And finally, when we have the cryogenic ignition initially and the entire 700 plus seconds was functioning completed to come to the satellite injection, cryogenic stage was shut down and the satellite was injected. But as an experiment, we have reignited the engine in a very difficult ignition conditions of a hard vacuum, and that was also successfully demonstrated by the change in acceleration, and that is a great experiment which is going to give us a lot of confidence in the future to proceed with flexible mission programs. So all in all, the L110 stage and the cryogenic stage as well as satellite propulsion system all have functioned very nicely, and the satellite propulsion team has a further long way to go. I'm sure we are going to have a very successful journey beyond this stage and to the final orbit. So congratulations specifically to the LPSC team, also the integration team at IPRC and the IPRC entire combined team of both the centers. And I'm sure we will have many more successes within the next few months itself. Thank you. Congratulations again. Jai Hind. Good evening to all. Congratulations to the entire mission. It has been very challenging to make the liquid stages, the testing of the liquid engines of L110 stage and the cryogenic stage, the integration of the L110 stage and the C25 stage for this mission, as well as the testing of the entire spacecraft propulsion systems at IPRC Mahendragiri has been very successfully completed. Apart from that, the supply of the ultra-high pure liquid hydrogen for this mission has been produced at IPRC Mahendragiri. Narayana, please. Thank you, sir. Most respected Chairman ISRO, all center directors, dignitaries and all my colleagues, good evening to all of you. As Chairman ISRO already pointed out, all our inertial systems functioned very precisely and orbit is injected with good accuracy. And hearty congratulations to all of you, and I wish satellite team also all the operations to be followed with grand success, and the mission will be grand success. Thank you all. Thank you. We have with us the Human Spaceflight Center Director, D.K. Singh. So D.K. Singh, for your views. Good evening, everyone. I think evening cannot be better than this when Mark III lifted the heaviest satellite from our soil and delivered it where it has to be. Compliment to the launch vehicle team, and I wish all the best for the satellite team who has realized a very complex satellite and a payload within India, which will give users the services and definitely the operational superiority. All the best. Thank you. We have got with us the telemetry and tracking activity carried out, the entire activity is carried out by ISTRAC, and we have got with us Dr. Anil Kumar, the director of ISTRAC. Dr. Anil Kumar. Thank you, sir.
Good evening to all. It's a momentous and joyous occasion for the whole nation and also ISRO. Let me congratulate all the ISRO team for these wonderful achievements. As far as ISRO elements are concerned, all the ground stations, communication links, ground segment, software segments, including Vedas, everything worked as expected. And also let me appreciate the efforts of our software reliability team and reliability who has done a wonderful review process. And thank you all, and let me wish all the very best for the spacecraft. Jai Hind. Thank you. As it was told, right now the satellite is totally healthy. Whatever problem we faced in the NVS-02 problem, we have overcome. Right now the valves are opened. And now it is a very busy time in Sriharikota. We are targeting 7 launches in this finance year in next 5 months time frame. And the launch preparations are in full swing for the next mission, which is also going to be a LVM-3 mission by NCIL, LVM3-M5 to launch a customer communication satellite. In fact, the entire activities are going on. We are targeting this by the second week of December. Then we have got the NCIL mission PSLV C62, which is also going to place a user-funded satellite EOS-01 before this end of this year. Followed by a SSLV L1 mission, again going to place a customer satellite. And yet another very, very important mission, we are going to have a PSLV vehicle placing the technology demonstration satellite in which we are going to demonstrate 34 new technologies. Followed by the EOS-5 or GASAT-1 satellite going to be placed by the GSLV F-17 vehicle. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, we have rolled out, Government of India has rolled out the space sector reform. Based on that, 5 PSLV vehicles were given to the industry consortium. And the first vehicle is successfully realized, and we are in the process of final assembly, and first launch is also targeted in this finance year. Another important activity, what you all are waiting, is the Gaganyaan activity. We have done whatever best possible work, and as you all know, we are supposed to accomplish 3 uncrewed missions before going for the crewed mission, and we all are working for the uncrewed mission, first uncrewed mission, in which a off-humanoid is going to fly, Vayamitra is going to fly. The activities are progressing well. In fact, most of the hardware has reached Sriharikota. The assembly activities are progressing well. Once again, I would like to extend my heartiest congratulations to each and every one of you. As there is a saying, the reward for hard work is more work. Our hands are full before this finance year. As I told, 7 more launches we have to accomplish. I request each and every one of you to extend better cooperation for accomplishing all these missions in a grand, successful manner, meeting the vision and direction of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Thank you. Thank you. Jai Hind. राय व्यक्त करती है, ये इस दौर की एक सबसे बड़े सोशल चेंज है। जब आप सोशल फैक्टर की बात करते हैं, तब आपको लगता है कि महिलाओं को मिले हुआ अधिकार, ये देखिए ये सारी चीजें जो आपको दिख रहा है,
ये आरती का वो दृश्य दिख रहा है जो इस समय में गंगा जी के किनारे में कहीं आरती का वो दृश्य होगा, वो भी आपको ये सड़क पे आज आपको दिख रहा है। तो ये पूरा नजारा जो पटना के बिहार के एक सांस्कृतिक वैभव का है, वो इस रोड शो में प्राइम मिनिस्टर के एक काफिले के साथ में आपको अलग अलग जगह पे दिखाई दे रहा है। तो आप कह सकते हैं कि बिहार के सांस्कृतिक समृद्धि की झांकी जब आप इस रोड शो में देखते हैं और उसमें लोगों की भागीदारी देखते हैं, तो यही सामाजिक भागीदारी, यही सहकारी समाज का जो ये आदर्श है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इतने वर्षों तक शासन में, सत्ता में, समाज सेवा में जोड़ के रखा हुआ है, इसका मूल आधार आप कह सकते हैं कि आपको ये सारी चीजें रोड शो में दिखता है। और ये रोड शो शायद और राजनेताओं के लिए एक कह सकते हैं कि एक मॉडल हो सकता है। जनता से आप जुड़ेंगे तो जनता का जुड़ाव आपके लिए घंटों ऐसे ही सड़क पे खड़ा होकर आपके लिए सैलाब बना देगा, जो पटना में नजारा हमारे सामने में है। निश्चित तौर पर विनोद जी, क्योंकि यहाँ पर जब हम देखा जा रहा है, क्योंकि ये सांस्कृतिक पहलुओं की जब हम बात करते हैं, वहाँ पर भी हमने देखा है कि भारत की जो सांस्कृतिक पहल है, वहाँ पर भी ये साफ तौर पर चरितार्थ इसको करती है। इस पूरे रोड शो में अलग अलग तरीके से इसकी झलकियाँ नजर आ रही है। विनोद जी, ऐसे में अगर हम इससे इतर अगर हम बिहार चुनाव को लेकर जब बात करते हैं, आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो आपकी बार सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं? और इसके अलावा अगर हम बात करें तो लोगों के दिलों में जो जगह बनाने का काम है, वो किस तरह से, किस प्रकार से अलग अलग तरीके से किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? चीज को देख रहा था या राजनीतिक होंगे वो इस चीज को देख रहे होंगे कि आज एनडीए के नेतृत्व में अगर आप देखिए कि सबसे बड़े स्टार प्रचारक में प्राइम मिनिस्टर मोदी और नीतीश कुमार है। 2-3 दिन से बिहार में जबरदस्त बारिश हो रही है। अब आप देखिए, जो युवा नेता कहलाने का दम भरने वाले तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, वो किसी रोड अपने प्रोग्राम में जो पहले से फिक्स प्रोग्राम है उसमें भी नहीं जा पाए हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि फोन से लोगों को एड्रेस कर रही थी कि मौसम खराब है, इसलिए तेजस्वी यादव के दर्जनों प्रोग्राम पिछले 3 दिन में कैंसिल हुए हैं। लेकिन 75 साल का नीतीश कुमार उस बारिश में भी सड़क पे यातायात अपने रोड से निकल के और अपने तय प्रोग्राम में पहुंच रहा है। तो ये डिटर्मिनेशन बताता है। बिहार के लोग इस प्राइम मिनिस्टर मोदी को जब देखते हैं कि वो उसका कोई शेड्यूल फेल नहीं हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के हर रैली में उनको आना है तो वो पहुंचते हैं, ये कमिटमेंट का लेवल होता है। आज बिहार में इस 3 दिन में देखा है कि 3 दिन में पिछले कई बड़े नेताओं का, युवा नेताओं का रैली कैंसिल हुई है, जनसभाएं कैंसिल हुई है, पब्लिक प्रोग्राम कैंसिल हुई है, लेकिन एक भी प्रोग्राम नीतीश कुमार का कैंसिल नहीं हुआ, एक भी प्रोग्राम पीएम मोदी का कैंसिल नहीं हुआ। तो आप अगर कोई कहता है कि 20 साल से नीतीश कुमार बने हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर लगातार देश में इतने साल तक प्राइम मिनिस्टर होने में भी अभी तक लगातार बने हुए हैं, तो उसके पीछे यही संकल्प है। मैं अभी वही आपको बता रहा था, जो रोड शो में महिलाएं जिस तरह से समाज सेवा को लेके खड़ी है, तो आप वही देखिए कि मैं यही चीज बार बार बता रहा हूँ कि ये सामाजिक, जब आप कहते हैं कि सोशल चेंज की बात करते हैं, ये किताबी बात नहीं है। सोशल चेंज जब आप उसको इम्पावर करते हैं, जो विमेन इम्पावर की बात आप अगर आप कहेंगे, तो बिहार में आपको विमेन इम्पावरमेंट के 100% सक्सेस दिखता है। आज अगर दीपिका दीदी हो या अपने सारी स्कीम को लेके महिलाएं वहां अपने को एक स्वरोजगार से जोड़ी है, ये एक अद्भुत है। हमारे यहाँ से जाने वाले पत्रकार या जो बुद्धिजीवी हैं वो इस चीज को समझ पाने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं कि बिहार का पर कैपिटा इनकम को आगे बढ़ाने में, बिहार को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में महिलाएं की सबसे बड़ी भूमिका है। और ये भूमिका इसलिए हुआ है कि इसको इंश्योर करने में प्राइम मिनिस्टर मोदी और नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान है। आज अगर आप बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप करते हैं, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेके आप अलग अलग तरह के नैरेटिव देते हैं लोग, लेकिन आज अगर बिहार में लड़कियां स्कूल की शिक्षिका कहीं से कहीं बस से जा के 25-25 किलोमीटर की जाके नौकरी कर रही है, स्कूल में टीचर हैं और वो अपने घर शाम में लौट रही है, ये सारे चीज लोग देख रहे हैं, जो बिहार के लिए एक अजूबा सी चीज लोगों को लगता है कि 15 साल पहले क्या बिहार की सामाजिक स्थिति ऐसी थी। नैरेटिव बनाने के लिए बिहार के परसेप्शन में चाहे लोग जिस तरह की बात करें, लेकिन ये रोड शो आप जब कभी आते हैं, समाज के हर तबके के लोग इस रोड में आजू बाजू में खड़े हैं और प्राइम मिनिस्टर का स्वागत कर रहे हैं, तो आप मान सकते हैं
कि जो डेवलपमेंट को लेके एनडीए के 20 साल के शासन में निश्चित तौर पर ये डेवलपमेंट और ये जो तमाम बातें हैं ये है। बहुत महत्वपूर्ण है। विनोद जी आप बने रहिए हमारे साथ। राजेश राज का भी रुख कर लेते हैं। राजेश, साफ तौर पर देखें तो जन सैलाब जो है वो धीरे धीरे करके और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग छतों पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिर्फ एक छवि पाने के लिए। बहुत कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है और साफ तौर पर क्या लगता है राजेश आपको कि अब की बार ये जो पूरा रोड शो पटना में हो रहा है कितना बड़ा प्रभाव ये पूरे चुनाव पर डालता हुआ नजर आएगा? राजेश, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो हथुआ मार्केट से होते हुए धीरे धीरे पटना के गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि यह जो अद्भुत मनोरम विहंगम दृश्य जो है वो पटना की सड़कों पर आप देख सकते हैं। जिस तरीके से सड़क के दोनों किनारे जो शारदा सिन्हा के गीत बजाए जा रहे हैं, छठ के गीत बजाए जा रहे हैं, जो यहाँ की परंपरा है, सांस्कृतिक जो रीति रिवाज है, उसको कहीं न कहीं फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। और एक बड़ा ही हम कह सकते हैं एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य है और इसको कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की रैलियों में बखूबी है। हम देखते हैं कि जब लोग यहाँ पर आते हैं एक अभिनंदन करने का जो कार्यक्रम इनका रहता है उसमें सड़क के दोनों किनारे लोग खड़े रहते हैं और एक व्यापक हम कह सकते हैं कि जन समर्थन पटना की सड़कों पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री का काफिला स्नेह धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जहाँ पर इसी गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने जेपी आंदोलन में हुंकार भरी थी। राष्ट्रकवि दिनकर की अनेक कविताओं का गवा रहा है पटना का गांधी मैदान। वहीं पर आकर पीएम मोदी का काफिला खत्म होगा। लगभग 2 किलोमीटर लंबा रोड शो जिसमें सड़क के दोनों किनारे हम कह सकते हैं कि एक भव्य जो है एक प्रस्तुति, एक भव्य रोमांच जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर राजेश ये जो तस्वीरें हैं बहुत कुछ बयां कर रही हैं और प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए लोग यहाँ पर किस तरह से उपस्थित हैं और जोरदार स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये और ज़्यादा भव्य होता हुआ नजर आ रहा है। सांस्कृतिक पहलुओं की जब बात करते हैं तो भी यहाँ पर हमने देखा है कि किस तरह से आरतियाँ उतारी जा रही हैं। अलग अलग रीति रिवाज जो हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया है और इसके अलावा भी जो भीड़ है वो भी प्रधानमंत्री के इस काफिले के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो निश्चित तौर पर ये जो पूरा रोड शो है वो अपने आप में तमाम कहानियां समेटे हुए है और ये कहानियां जो विगत 11 वर्षों में जिसकी शुरुआत हुई और उसके बाद से लेकर अभी तक लगातार हम देख रहे हैं कि जो उपलब्धियां हैं वो सरकार ने हासिल की और उसके बाद लोगों से ये जो जुड़ाव है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। विनोद जी, लगातार हम देख रहे हैं काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसी के साथ साथ ये जो भव्यता है वो और ज़्यादा दिव्य और भव्य होती हुई नजर आ रही है। अब की बार के चुनाव में अगर हम देखें तो तमाम ऐसे मुद्दे जो प्रभावी हैं जो आपने भी गिनाए और उसके अलावा भी आपने तमाम रणनीतिक पहलुओं की बात की, लेकिन अब की बार जो स्थितियां हैं वो आपको क्या लग रही है? क्योंकि ये रोड शो जो है उससे साफ तौर पर जो जुड़ाव है वो और ज़्यादा मजबूत और सशक्त होता हुआ नजर आएगा। क्या लगता है आपको कि आने वाली राह अब और कैसी होने वाली है और कितनी मजबूत अब की बार भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव में उभर कर नजर आएगी बिहार की दृष्टि से देखें तो? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, देखने वाली चीज इस रोड शो में ये है भरोसे का। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है एक विश्वास का, जिसको आप जन विश्वास कहते हैं। जब आपके साथ में लोगों का विश्वास और भरोसा होता है तब आपको यह बहुत सारे वादे गिनाने का कि चांद तोड़ देख के दे देंगे, सितारे दे देंगे, सूरज दे देंगे, आसमान दे देंगे, लेकिन उसमें जो क्रेडिबिलिटी है, वो भरोसे की जो सबसे एक मजबूत पक्ष है, वो मजबूत पक्ष आपके पास नहीं होता है तो आपके सारे ये वादे हवाई हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी सभाओं में कोई ऐसे बड़े वादे की बात नहीं कर रहे हैं। बिहार में इलेक्शन अनाउंसमेंट से पहले और इलेक्शन के दौरान में जो प्राइम मिनिस्टर के मोदी की अभी तक पिछले 2-3 महीने में कम से कम दर्जन से ज्यादा रैलियां हुई है
और कभी उन्होंने नहीं कहा है कि हम आपको ये दे देंगे, हम आपको वो दे देंगे। लोगों को जो मिला है वो लोगों के सामने में है, लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। तो ये बात लोग जानते हैं कि जब वो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो ये मोदी है तो मुमकिन है, ये ऑपरेशन सिंदूर भी मुमकिन है, तो दरभंगा और पूर्णिया में एयरपोर्ट भी मुमकिन है। अब आप दरभंगा में के काम करने वाले वहाँ के आसपास के 25 से 30 किलोमीटर के लोग, और अब पूर्णिया में आप एक एयरपोर्ट बनने से वहाँ पश्चिम बंगाल से लेके बॉर्डर के उस पार नेपाल तक के लोग, अगर उनकी कनेक्टिविटी भारत में कहीं भी घंटे 2 घंटे हो गई है, तो ये इसलिए हुई है कि मोदी है तो मुमकिन है। कि अगर पटना के गली से लेके और गांव के गली तक में सड़क के मामले में कोई अंतर नहीं है, अगर बिहार में एनएच का, नेशनल हाईवे का जाल बिछा हुआ है, अगर बिहार में ट्रेनों की संख्या सबसे ज्यादा है, बिहार में इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेनों का हुआ है, 24 घंटे अगर बिजली का इंश्योर अगर पूरे कहीं देश में, कहीं गुजरात में है, तो आज बिहार में भी है। तो अगर इतना चीज लोगों को मिला हुआ है बॉस, तो आपको किसी और वादे की, चांद तारे की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम आपको ये दे देंगे, हम आपको वो दे देंगे। कुछ दे देंगे में आपका वो भरोसा नहीं टिकता है, आपका वो विश्वास नहीं टिकता है। तो ये क्रेडिबिलिटी जो